This PPT is visible to everyone. Yes, it's visible. Okay. So I'll start it with the exposure triangle. I think everyone will know that what is exposure triangle is, but it's our first class, so maybe someone don't know about it and not aware of it. So we'll start it with it, and I just brief it what it is like. So it's I will start it with the aperture. Yeah, as I said, it's exposure triangle. So you guys know about it. It's ISO, shutter speed, and aperture. These three elements affect your exposure, like in terms of light, right? Basically. And what is image is? Image is just the pattern of light. Through the lens, light is falling on your sensor, then the image is created. That's the things. But these three things affect your exposure, right? You can increase it, decrease it, right? So first element is aperture and how it's affect your exposure, right? So basically by changing the diameter of lens opening, aperture affect your exposure. As you can see over here, f1.4, f2, f2.8, f4. So have you seen there's a different size of your aperture, right? And the aperture is denoted in f numbers. So it's f1.4, f2, f2.8, f4, 5.6, and 8. So you can see over here, f1.4 is bigger and f2 is smaller than the f1.4. So anyone have any idea why it is? क्योंकि numbers increase हो रहा है और that the size is decreasing. ऐसा क्यों हो रहा है? Sir, because aperture जो exposure है, that is if that based into the camera, if that based on the aperture, shutter angle, and ISO, so these all has their independent values, No. individual values. So whenever one value, like they are directly proportional to and indirectly proportional to each other. So can I answer? Yeah, sure. I believe because ऐसा इसलिए होता है, depth of field is the reason behind it. Like जो depth of field होती है वो ज़्यादा change होती है, and the background will be more blur or less blur. Okay. Let's start from there, right? Yeah. In aperture, थोड़ा सा confusion क्या होता है? Larger the number, smaller the opening, right? Have you seen Yes. over here? The larger the number, smaller the opening. It means the smaller the opening, less light will comes in, right? So it's very simple. Opening जितनी छोटी होगी, light उतनी कम आएगी, right? यही है इस diagram in this diagram, right? It's just like your windows. विंडोज में क्या करोगे आप? अगर छोटा होल होता है, राइट, तो लाइट क्या होती है? कम आती है. इफ यू ओपन इट मोर, क्या होगा? लाइट ज्यादा आएगी. बट द क्वेश्चन इज दैट नंबर्स हैं 1.4, 2, 2.8. लार्जर द नंबर, स्मॉलर द ओपनिंग. व्हाई इट इज? एंड दिस इज द डायफ्राम ओपनिंग. 1.4 is just the number. 1.4 is not the diameter measurement. Have you seen the aperture? This is called diameter. Have you seen it? Just see, f1.4, it's bigger, f5.6 is smaller, f16, it's too smaller, right? Yes. So, but this f1.4 is not the measurement of diameter. This f1.4 is not the measurement of diameter. It's just the number. अगर ऐसा होता, diameter का measurement होता तो क्या होता? That f1.4 should look smaller. होता ना? Right. f1.4 is smaller. So the thing is that just the numbers. ये stop में होता है. We'll talk about later. So why 1.4 is look bigger than the 5.6, right? So there is a very small mathematics. To calculate the diameter of your aperture, iris basically, you can divide your focal length by your f number. Suppose for an example, easily calculate करते हैं. Pen and paper है? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Look one thing. Just take an example of 50 mm lens.
Write down 50 mm. Okay. Divide your 50 mm by 1.4. What happened? It's 35.71, right? Hmm. Yeah, Right. right. Yes. Well, clear. Now, the another stop is 5.6. Divide 5.6. It's 8.9. Alright? Is it? Yes, sir. Yeah. Okay, now divide your 50 mm, sorry, 50 mm by 16. 3.125. Yes, sir. Now what happened? Now see your calculation. When you are on 50 mm, right? 50 mm, sub में 50 mm है, right? F1.4, what was the diameter? On 50 mm, once you are on F1.4, what was the diameter? 35.71. 35. At the 60, it's 3. Have you seen? Whenever just you increase the F number, what happened? Opening become smaller. आप जैसे ही F number बढ़ा रहे हो, what happened? Opening आपका कम होते जा रहा है. Yes, true. That's the mathematical calculation, but you didn't need it. But just wanted to explain it कि why it's become smaller. Easily क्या होता है? It's very easy to make a number like that. कि आप जितना बड़ा opening, number will be that much or bigger, right? So F number is not the diameter basically. So don't get it confused. F number is just the numbers to quantitative stop. अगर इसको बहुत easily याद करना, if you wanted to remember it, like F stop, confusion होता है ना, F 1.4, 1, 2, 4, right? Like that in a stop. Don't remember it. Only remember two stop. That is 1 and 1.4. 1 and 1.4. I'm repeating. 1 and 1.4 and now make it double. 1 का double क्या होगा? 2. 1.4 का 1.4 का क्या होगा? It's a 2.8. फिर 2 का डबल क्या होगा? 4. 4. 2.8 का क्या होगा? 5.6. 4 का क्या होगा? 8. 5.6 का क्या होगा? 11. 8 का क्या हुआ? 16. 11 का क्या? 22. 16 का क्या? 32. राइट? हैव यू सीन अपर्चर लाइक दिस? ऐसा ही होता है ना आपके कैमरे में? Yes. Yes. ऐसा ही होता है अपर्चर स्टॉप में? Yes. Yes. No, it's depend upon your camera and lenses, but from one it is started. If you want to calculate in terms of a stop, अगर आपको कहीं calculate करना हो how many stop it is, आप ऐसे ही calculate करोगे 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6 like that. But only you need to remember is two numbers only. सिर्फ दो नंबर आपको याद करना है 1 and 1.4. Now just make it double. इसको double कर दीजिए. So now is it clear why it's bigger, why it's smaller? So there Yes, was a sir. question ki larger the number, smaller the opening. So it means by changing the diameter, it's affect your exposure. So when there is a smaller opening, there is a less light will come, right? So now there's a one more thing that is affected by your F number, that is depth of field. What is depth of field is? Depth of field is zone of acceptable sharpness. The zone of acceptable sharpness called depth of field. Okay, 1 second, I got on this. Yeah, you guys can see this bottle is sharp and the rest of area is unsharp, right? So this area, which is in focus, called zone of acceptable sharpness. How many of you have not seen the PPT?
Sir, I can't see it. You're not seeing the PPT. No, sir. Sir, no share नहीं हो I रही है। also can't see. And Shubham? हाँ सर, शेयर नहीं हो रही है सर। इट्स ओनली शोइंग these two PDF फाइल्स, एक्सपोजर ट्रायंगल एंड POS एंड डेप्थ ऑफ फील्ड। ये बाकी ये दिख नहीं रहा है आपको? नहीं सर, आप उसके बाद कोई और अलग विंडो नहीं दिख रही। 1 second, just give me 1 minute. Just Yes. give me one. Now Yes sir, now it's visible. Yes, it's visible. Yeah, it's visible. visible now. So I have to start it again now. Sorry. Now, as you can see, now I'm talking about these numbers, right? F1.4, 2, 2.8, 4, 5.6. As you can see, larger the number, now it's become a smaller the opening, right? So when there's a smaller the opening, less light will come. It's clear. But just think about your windows now. कि हल्की सी ओपनिंग होगी लेस लाइट आएगी, ज्यादा ओपन करोगे ज्यादा लाइट आएगी. It's very simple. So I was talking about the depth of field. Now you can see this bottles. So there is only bottle that is in focus. So this area called depth of field. But when you need to explain the depth of field, you have to use word acceptably sharp, because there is a critical focus that is only a single point. जहाँ focus करते हो, right? If you guys have ever used the lenses जिसपे कि वो distance लिखा हुआ रहता है, focusing distance ring के ऊपर, so you are focusing on 5 feet or 4 feet or 10 feet, whatever. So that 10 feet will be the critical focus point. And after that, what happened? Before that point and after that point, there is acceptable sharpness. So whenever you are explaining the aperture, you need to use a word called acceptable sharpness. So zone of acceptable sharpness is called depth of field. Here you can see at 1.4, there's a F number 1.4. See over here, there's a less depth of field. As in technically we call it shallow depth of field. Right. Now for the second image, as you can see over here, it's f5.6. Bit of area, right? The more area is in focus right now. If you compare it with the 1.4, I'll say 1.4, you can see 5.6, more area is focus. So it means abhi kya hai? Zone of acceptable sharpness is increased. Now at f16, much more area is in focus. Almost everything is in focus. So now the question is, why at the point of f1.4, there's a less depth of field, there's a shallow depth of field, but why at f16, there is a great depth of field? It's very simple. Up, just like the sunlight किसी एक pinhole से light अगर आए, if the light is falling from a pinhole, right? What happened? Is that light is sharper or not? Yes, Yes sir. sir. That light will be sharper, right? Just open your windows totally. What happens? There is a more amount of light. But do you think that light is that much of sharper if you compare that light with the pinhole or the like ventilation that the beam of light is falling? Which light is more sharper? Windows one or from the soffit or some pinhole areas light is coming? So pinhole one. Pinhole one is more sharper, right? Because need to penetrate. So here your answer, because at the F16, what happened? Your
opening is become smaller, right? As you can see over here, I see f1.4. So think like your windows कि यहाँ f1.4 पे क्या हुआ, विंडोज ओपन हो गया है. Now f16 एक पिन होल से एक वेंटिलेशन से लाइट आ रही है. So which one will be more sharper? The f16. So it means zone of acceptable sharpness is greater in the larger f number. Larger the number, smaller the opening, less light will come, right? But you will get great depth of field in compared to a smaller f number. So it's very simple. एक लाइन में याद हो जाएगा, larger the number, smaller the opening, less light will come, but great depth of field, right? Is there any confusion? No, sir. But one more thing, depth of field is not only affected by the aperture only, right? There's a many things that affect your depth of field. Like there's a three things that directly affect your depth of field, but there is also fourth one that is indirectly affect your depth of field. So right now we'll discuss on that three things that directly affect your depth of field. And that is, one is your aperture, another is your lens, third is distance. So we'll discuss it. But firstly, we discuss the shutter speed. There's exposure triangle. Now, shutter speed. So firstly, what is shutter is? Shutter is just the curtains between sensor and the lens, right? It's just like, just think about the curtain, just think about the shutter, right? That's the shutter. And shutter speed is amount of time your shutters remain open, that is called your shutter speed, right? कि जितने टाइम के लिए शटर ओपन रहेगा, that is your shutter speed. Sorry. Again, just like aperture, shutter speed भी दो चीजों को अफेक्ट करता है. लाइक शटर स्पीड, जैसे कि अपर्चर क्या कर रहा था, लाइट एंड डेप्थ ऑफ फील्ड. Light and depth of field, just like shutter speed also, it will affect your exposure as well as your motion blur or freeze the motion, right? So just think like your shutter, कि whenever you are opening the shutter very slowly, right? Or like you just open it and hold it. So what happened? The more light will fall inside, right? If you open something very fastly, close it very fastly, what happened? You get less amount of light. Does things happen? Yes, sir. So amount of time your shutter is remain open. So more amount of time, like कि ज्यादा देर तक खोल के रखोगे तो क्या होगा? Just like you guys have seen the light painting. So image is just like that. You are in paintings, you are painting with the brush and another things. But in photography, you are painting with lights basically. So what happened? Amount of time you are just opening your shutter. जितने ज्यादा टाइम के लिए ओपन रखोगे, उतने टाइम तक लाइट वहां पर क्या होगी? जाएगी, right? So you can see in this image now what happened. Is it called blur? So what happened? Whatever the speed of the character or subject is not matching the speed of your shutter, right? So basically what happened? Your subject speed is faster than your shutter speed. So that's the reason there is a motion blur. Same with this example. So now what we need to do is, the things is that upper part is in rest mode, and वो नीचे क्या था, पैर चला रहा. So that's the reason पैर का स्पीड कुछ और था. बॉडी स्टैटिक है, so बॉडी ऐसा नहीं हुआ, बट पैर क्या हुआ, पूरा का पूरा ब्लर चला गया. The reason is your shutter speed is slower than that moment. So now
to freeze that things, what you need to do is, right? Now you have to increase your shutter speed. So you can see in third one, now see, fourth one, no, this one, not this one, this one. Now there is a faster movement, but things is freeze, right? See to it. Now here you can see in this example what happened. जो कैरेक्टर के सामने चीजें हैं वो क्या है, वो मोशन ब्लर हो गया, बट कैरेक्टर क्यों नहीं हुआ है? द रीजन इज कैरेक्टर आपका स्टैटिक है, सो वट एवर शटर स्पीड दैट यू आर यूजिंग वो कैरेक्टर से मैच कर रहा है, वट एवर द स्पीड ओवर देयर, बट जो बाकी चीजें हैं वो इसके स्पीड से मैच नहीं कर रहा है, सो दैट्स द रीजन इट्स अपीयर ब्लरी। यहाँ भी देख सकते हैं। So freeze the motion, you have to need the faster shutter speed, right? So just like aperture, if you will use the faster shutter speed, what happens? You will get less amount of light. शटर में एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। So you guys are using a DSLR camera, right? Or you're not the familiar or familiar with it. So whenever you are releasing the shutter, have you heard the sound of shutter? Whenever you are releasing, composing a frame and releasing shutter for the photography, right? You heard a Yes, sir. shutter sound, right? The Yes, physical sir. shutter sound. But have you heard that sound when you are recording the videos? No. No, sir. The reason is कि आपका जो फ्लैंक शटर है, फोकल फ्लैंक शटर है आपका, इट्स ओनली वर्क फॉर द photos only. So there's a two types of shutter, right? So basically there's an electronic shutter is working when you are recording in video mode, right? Once there, have you seen the photograph? जब आप photograph click करते, what happens? There's a physical shutter is over there, right? When you release the shutter button, at that point of time, halfway क्या होता है वो? It's open and then it's closed. But when you are recording videos, at that point of time, that physical shutter is not working. जो फोकल फ्लैंक शटर है आपका, दैट इज नॉट वर्किंग। क्या होता है, वेन एवर यू स्विच टू वीडियो मोड, अब यू आर नॉट एबल टू सी थ्रू द व्यू फाइंडर इफ यू आर यूजिंग ऑप्टिकल व्यू फाइंडर। इफ यू आर यूजिंग ऑप्टिकल व्यू फाइंडर, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट हैपन, मिरर ऊपर चला, सॉरी शटर आपका ऊपर चला जाता है, सो दैट्स द वन रीजन यू आर नॉट एबल टू सी थ्रू द व्यू फाइंडर इन वीडियो मोड इन ऑप्टिकल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑप्टिकल व्यू फाइंडर। ऑप्टिकल में वो आपको नहीं दिखाई देगा, कारण कि शटर क्या होता है, ऊपर चला जाता है। बट नाउ व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग वीडियोस आल्सो देयर इज शटर स्पीड, राइट? सो विच शटर स्टार्ट वर्किंग ओवर देयर, बिकॉज अगर आपका शटर ओपन हो गया तो व्हाट हैपन इज काइंड ऑफ लाइट पेंटिंग विल बी देयर, राइट? बट ऐसा तो नहीं होता है। एट टाइमलाइन यू सीन, इफ यू आर शूटिंग ऑन द 25 fps, you can see there's a 25 frame. It means every time the one frame is released, right, for the 1 second, there is a, every time there's a 25 frame. There's no, not only one frame, there's a 25 frame. So basically every time what happens, shutter charged one frame, then discharge it, then again charge another frame, then discharge it. So then there will be the 25 frames. So now that is electronic shutter, that is not physical shutter, right?
Sir, excuse me. Yeah. How is it possible for mirrorless cameras to mute the shutter sound? To mute the shutter, so many of camera is not muted. Look, to mutate the shutter sound, you can't mute it. It's a crime. It's a government law. At least there will be there is an option to mute the shutter sound. There's an option. Yeah, it is there. There's an option to mute the shutter sound. So there's a technical there's thing, but this one is crime because you can't capture because क्या जब तुम shutter release करते हो so that's the reason there is a sound. They can make it like a soundless. कोई बात नहीं because पूरा का पूरा silent बना सकता है. But सामने वाले को पता होना चाहिए. They got to know that the someone is capturing. So that's the reason there is a shutter sound. आप देखो कैमरा में ऑप्शन होता है फॉर द साइलेंट शटर ओनली. Yeah, वहां पर ऑप्शन होता है यू कैन मेक इट साइलेंट. yeah, राइट. वो साइलेंट yeah. बन भी सकता है ऐसा नहीं है वो आवाज नहीं करेगा. है ना. No, the third term is your ISO. ISO is very simple. It's your sensor sensitivity towards the light, right? कि आपका सेंसर कितना सेंसिटिव है लाइट के लिए. दैट्स द आईएसओ. इफ यू इंक्रीज द नंबर्स your sensor become more sensitive. So क्या होगा ज्यादा ब्राइट दिखेगा आपको. But every sensor have the certain limitation in terms of ISO and depend upon the brand to brand कि कितने ज्यादा कर सकते हो और ज्यादा बढ़ाओ क्या होता है you feel there is a noise. So every camera have the certain limitation. So most of the time when we are playing with the exposure triangle there is only shutter speed and ISO. Also, shutter speed has a certain limitation when in terms of videos, even in terms of the still camera also, there is certain limitation, there is certain rule. Before that, right now, there's a in camera or in lenses, there's image stabilization, IS mode. Before that, there was a rule that in terms of photography, I'm talking what, I'm not talking about the video right now. There was a rule, whatever your focal length, suppose you are shooting on 70 mm or 100 mm, your shutter speed should not less than that. आपका शटर स्पीड उससे कम नहीं होना चाहिए. सपोज यू आर शूटिंग ऑन 1/50, यू शुड नॉट शूट बाय 1/30. इमेज उतने शार्प नहीं आएंगे आपके. राइट. बट नाउ डेज in camera there is an image stabilization mode. In lens there is image stabilization mode. If you guys have your camera you can see over there उसमें भी stop लिखा हुआ रहता है कि image stabilization 2 stop, image stabilization 3 stop. Right. So now you can use it, but the rule is whatever your focal length is, your shutter should not less than that. Your shutter speed should not less than that. And another is for the videos, your whatever your frame rate, your shutter should be double of it. So someone of you have used the word called shutter angle. In cinema camera there was an angle, but in our digital camera there is no angle at all. कोई angle नहीं होता है, option होता है बस. That is for the calculation only. That option is only for the calculation. In cinema camera, you guys have seen this DVD or CD, right? The circle 360. That kind of angle was there in cinema cameras. But अभी क्या हुआ बहुत से कैमरे में they are using that word shutter angle, right? But वो कहीं से angle होता नहीं है. This is for only for the mathematical calculation. They use those things. Later on, I will explain why it is. So for an example, you can see ISO 200, ISO 3200. What is there? This image looks sharper. No, there's a much more grain is over there. Much more grain, but sharper also there. Yeah. If there's a grain, image won't be sharper that much. अगर आपका image में grain होगा, that won't be sharper. So, but the thing is that every camera have the certain limitations. तो ये नहीं कह सकते 800 is okay or 200 is okay. Every camera have their own base ISO. Give me 1 second.
Sorry, yes. Okay. Now here you can say कि most of the time you guys have heard a word called stop. You one stop कम कर दो, one stop ज्यादा कर दो, right? Or either in terms of lighting, you guys can heard the word कि 1:2 का है, lighting जो है 2:1 है, और 4:1 है, 8:1 है, right? So what is a stop and what is the relation with the light of it? So here you can see 100, 200, 400, 800, 1600. But in your camera or digital camera, you guys can see 100 के बाद 150 है, right? Then 200 at 200, after 200 there's a 300, after 300 there is a 400, right? Like that. Kind of 640 भी होता है. So why there is 100 and 200? So when we are talking about the stop in terms of exposure, right? So it means when you are talking about the one stop, either it will be half or double. If you are increasing the intensity of light, it will make your light double. If you are decreasing the intensity of light one stop, that will decrease half. Suppose for an example, just write it, याद हो जाएगा अगर आपके पास pen and paper है. Write it. Suppose at 100 ISO, आपका जो ISO है that is 100, right? In any whatever the shutter speed aperture, just leave it. उसको भूल जाइए. If you make that 100 ISO 200, right? In any lighting condition, suppose for an example, whatever light that you are using is 1000-watt light, or example 50-watt light, right? Your exposure is, your ISO is 100, your aperture is 5.6, your shutter is 1/50. Now you just increase your ISO by 100 to 200. Now what happened? You are just increasing the intensity by one stop. So what happened? That 50-watt bulb become now is 100-watt. That 50-watt bulb become 100-watt. The same with to 200 to 400. Now that 100-watt become 200-watt. Now just like that, अब क्या करो? उस 400 ISO से 200 पे आओ. Just decrease the intensity. Now what happened? What will be the intensity of your bulb? Now what will be the intensity of your bulb? 100. 100. Right? So ये क्या हुआ 200 का? 200 का 100 क्या हुआ? 200 Half, का no? half. Half हुआ ना? Yes. So now you got your answer. Once you are decreasing your intensity, it become half. Once you are increasing the intensity, it's become double. अभी 200 पे गए ना हम, सीधा जब हमने आईएसओ को 200 से 400 किया, राइट? तो क्या हो गया आपका 100 200 हो गया. वन स्टॉप बढ़ा ना. Yes, sir. If there Yes, any sir. confusion, एक काम करो, make it again ना. कंफ्यूजन हो रहा है किसी को? Yes, sir. थोड़ा सा. थोड़ा सा हो रहा है. Okay, write it down again. There is a process. Write it down again. Okay. Suppose तीनों एक्सपोजर वैल्यू लिखते हैं. Aperture f number is 5.6. Okay. Shutter is 1/50. Shutter is 1/50. ISO is 100. In any circumstances, किसी भी situations में. And now whatever light, suppose कोई लाइट, कौन सा लाइट है तुम्हारे घर में? मान लो कोई 50 वॉट का कोई भी बल्ब, एनी बल्ब दैट इज विद इन द फ्रेम, जो कि आपके कैरेक्टर के लाइटिंग के लिए लगाई हुई है. सपोज करो फॉर एन एग्जांपल दैट द 50-watt बल्ब, राइट? ठीक है. नाउ आपका आईएसओ क्या, व्हाट इज योर आईएसओ इज 100. 100. 100. नाउ जस्ट मेक दैट 100 आईएसओ टू 200. कैमरे में क्या होता है? ब्राइटनेस बढ़ती है. Yes, sir. Brightness बढ़ता है. वेरी सिंपल. वंस यू इंक्रीज योर आईएसओ, व्हाट हैपन? You see, exposure have been increased, right? But how much? ये कैसे पता चलेगा 100 को 200 किया? तो how much it is? तो in terms of calculation, क्योंकि हम स्टॉप में बात करते हैं, because if you need to diffuse the light,
you wanted to use any diffuser or diffuser material, or either you are using a filter, even the filter have the certain factor कि half stop light काटता है, होता है, ND1 stop है, ND2 stop, ND3 stop. So how you calculate those things? So once you make that 100 ISO to, suppose करते हैं 200, 100 to 200, right? अब क्या हो जाएगा, आपने एक स्टॉप बढ़ाया ना 100 से 200, इट्स वन स्टॉप ना, एक 100 आईएसओ से आप 200 आईएसओ पर गए, दैट्स द वन स्टॉप. इंक्रीज हो रहा है, Yes, sir. आप यहां देख लीजिए, नहीं हो रहा है तो यू गाइस कैन सी ऑन ये पीपीटी देख सकते हैं. 100 से 200 के बीच में वन स्टॉप का डिफरेंस है, इट्स नॉट 150. ठीक है, अब 100 आईएसओ से 200 पे गए, दैट्स बिकम द वन स्टॉप. अब यहां पर क्या हो रहा है, आपने एक्सपोजर बढ़ा दिया. सो एक्सपोजर जो आपने वन स्टॉप बढ़ाया तो 50 वॉट बिकम 100 वॉट, डबल हो गया सीधा. एक्सपोजर सीधा क्या होगा, डबल हो जाएगा. अब इसी को करो आप क्या, कि 100 को आपने कितना किया था, 200 किया था ना, हमने 200 किया है ना ऐसो. Yes, sir. Yes, sir. अब करते हैं 200 को 400. ठीक है, 200 को करते हैं 400. अब क्या हो, ये लाइट क्या हो जाएगी, जो और 100 ज्यादा वॉट increase हुई होगा। क्या हो जाएगी, 200. 200 volts. 200 200 watts. नो नो. अब नाउ फ्रॉम द 400 टू 400 आईएसओ पे थे, अब मुझे लग रहा है लाइट ज्यादा हो गई. नो, व्हाट विल डू, जस्ट डिक्रीज द इंटेंसिटी. अब मैं 400 से 200 पे चला जाऊंगा, मुझे लग रहा है लाइट ज्यादा है, फिर से हमारी लाइट क्या हो जाएगी. 100 कम हो volts. जाएगी। सो अब एक चीज बताओ, व्हेन यू 100. आर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, उस टाइम डबल हो रही थी इंटेंसिटी, Yes. और जब डिक्रीज कर रहे हैं तो हाफ हो रहा है. Yes, sir. जब डिक्रीज कर रहे तो हाफ हो रहा है. चलो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल विद द अपर्चर. अभी शायद यहाँ 100 है, दैट्स व्हाई यू गाइस आर कंफ्यूजिंग. तो आ जाते हैं अपर्चर में. अपर्चर का पता है नंबर 1, 1.4, ये नंबर लिख लीजिए, मान लो सपोज फॉर एन एग्जांपल. ठीक है, अपर्चर का जो स्टॉप है, अपर्चर का 1 से 1.4 में वन स्टॉप का डिफरेंस है. इज इट क्लियर, 1.4 में वन Yes. स्टॉप डिफरेंस है, Yes, sir. राइट. Yes, 1.4 sir. से 2 में वन स्टॉप, राइट. Yes, Yes, sir. sir. 2 से 2.8 another stop. So write down the number fastly. 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6. Write down the number. Now there are situations. अभी अब एक सिचुएशन है आपके पास कि इसमें क्या है, आपको ISO 100 है, shutter speed is 1/50, your aperture is 2.8. Your aperture is 2.8. ठीक है, एंड वॉट एवर, कोई ना कोई लाइट तो यूज करोगे ना, दैट लाइट हैव द सर्टेन इंटेंसिटी. Yes, sir. सब होगा ना, कोई ना कुछ होगा. Yes, sir. सपोज यू हैव द 1000 वॉट बल्ब, आप में एक लाइट लगी है, दैट इज 1000 वॉट. इन दैट सिचुएशन, इन दैट कैमरा सेटिंग्स, नाउ व्हाट यू इज, तुमने क्या किया, 2.8 से 4 पे चले गए. एक स्टॉप क्या हुआ, कम ऑन, जाता है यहाँ पर. 2.8 से 4 क्या है, वन स्टॉप है. आप लोगों ने लिखा हुआ है ना, Yes, sir. 2.8 Yes, to sir. 4, it's one stop, right? Yes, sir. Yes, yes. 2.8 से 4 क्या वन स्टॉप है. Yes, चलिए, sir. और एक चीज बताओ, 2.8 से 4 पे जाने पे क्या हो रहा है, व्हाट हैपेंड, जस्ट क्लोजिंग द डायफ्राम. Sir, और ज्यादा Light यहाँ दिख कम रहा है आप होगी। लोगों को 2.8 से लाइट 4 पे कम क्या हो हो रही रहा है, है, Light कम होगी। स्कैटर नहीं हो रही है लाइट ज्यादा. लाइट और कम हो रही है, बिकॉज इट्स यू आर जस्ट क्लोजिंग द अपर्चर एंड देन वन स्टॉप हो रहा है कम. कितना कम हो रहा है 2.8 से 4 में, वन स्टॉप कम हो रहा है. One stop. तो बेसिकली अब क्या हो गया पता है, वो उस वन स्टॉप ने कम करके क्या किया, आपके एक्सपोजर को आधा किया. दैट 1000 वॉट बिकम 500 वॉट. Yeah. दैट 1000 वॉट बिकम 500 वॉट. उसने लाइट की इंटेंसिटी को आधी कर दी, है ना. अब सेम थिंग्स, हम 2.8 पे थे, 4 पे पहुंचे थे. अब एक काम करो, 2.8 से ना हम आ जाते हैं 2 पे.
वन स्टॉप क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। वन स्टॉप लाइट बढ़ी। यस सर। क्लियर? वन स्टॉप लाइट बढ़ गई। 2.8 से 2 के बीच में एक स्टॉप का डिफरेंस है। Yes, वन sir. स्टॉप डिफरेंस. Yes, sir. So now you are just increasing the intensity of light by one stop. Now that 1000 become 2000 watt. यस सर। That 1000 watt become 2000 watt. So what happened over there? Once you are increasing the intensity, now it's become two. That just remember one thing. अगर इंटेंसिटी की बात हो रही है, इंक्रीज करोगे वो आपकी इंटेंसिटी को डबल करेगा, डिक्रीज करोगे हाफ कर देगा. सो आइदर इट्स हाफ और डबल, हाफ और डबल. एक्सपोजर कंपनसेशन भी करके भाई देख लो. साहब या हेलो. नहीं चल रहा है। हेलो. चलो इसको थोड़ा और क्लियर कर ले. एक्सपोजर ट्रायंगल से कंपनसेट करना. अभी भी कंफ्यूजन है किसी को इस स्टॉप में? No, sir. इज इट नो सर। क्लियर? अब समझ, बड़ा सिंपल सा एग्जाम बेटा. आप बना के कुछ भी लिख लोगे आप लोग. किसी भी वॉट का बल्ब कुछ भी एग्जांपल के लिए रख लो. इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर वो वही हो रहा है, इधर इट्स हाफ और डबल हो रहा है. ठीक है. अच्छा, आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा ये भी कि यू गाइस हैव मतलब 2:1 की लाइटिंग है, 4:1 की लाइटिंग है. यू गाइस हैव हर्ड अबाउट इट? नो. यस सर। चलिए उस पर फिर बाद में बात करते हैं. अभी यहां तक क्लियर है? स्टॉप. चलिए. I told you earlier, guys, कि there is a three things that affect your depth of field. One is aperture, another is focal length, third one is distance. Now you can see over here. See the focal length. With a 28 mm wide angle lens at f4, both the bottle and the surroundings are sharp. 28 mm lens है, the same f4 aperture है. ठीक है. See the second image. Sorry. Now, with the 200 mm zoom lens at f4, the bottle is sharp but the background is blurred. In order to get the shallow depth of, you should zoom in closer to your subject to get the larger depth of field. Zoom out. Now see the difference. अभी हमने आपको बताया था कि aperture affect your depth of field by changing the diameter of lens opening. But here what happened? f4 is remains same, aperture remains same. यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, right? दोनों में सेम अपर्चर है ना. Sir. यस Yes, sir. यस सर। But the things that have been changed is your focal length. 28 mm, 200 mm. फोकल लेंथ चेंज हो गया. Yes, sir. लाइट पे कोई इंपैक्ट नहीं है. Because if you change the diameter, if you change the aperture, then there will be effect on lighting. There will be effect on your exposure. But यहाँ ये नहीं है. नहीं है ना. Yes, sir. नो यहाँ सर पर क्या हो नहीं रहा है। है? So बड़ा सिंपल है. Wide angle lenses have the great depth of field and the telephoto lenses have the shallow depth of field. है ना. कि आपको अगर डेप्थ ऑफ फील्ड ऐसे नहीं पता हो रहा है, अपर्चर से नहीं हो रहा है, तो यू कैन कंट्रोल इट थ्रू द lenses also. इसलिए देखते होगे ऑन गिम्बल पीपल आर यूजिंग ओनली वाइड एंगल लेंसेज. कोई टैली यूज नहीं कर सकता बिकॉज थोड़ा सा भी मूवमेंट और सब कुछ आउट ऑफ फोकस. सो दैट्स द रीजन दे आर यूजिंग वाइड एंगल लेंसेज, बिकॉज उसमें क्या होता है, यू गॉट ग्रेट डेप्थ ऑफ फील्ड. है ना. यहाँ क्या, अच्छा ये हो क्यों रहा है 7200 और ये क्या कहते हैं, सॉरी, वाइड एंगल में देयर इज अ ग्रेट डेप्थ ऑफ फील्ड एंड टेलीफोटो में शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड. Why it's happening? You guys know what is focal length is?
focal length is your rear element of your lens to the sensor. Rear element आता है lens का. The Yes, sir. distance between rear element of the lens to the sensor when your image is focused. That is focal length. So, have you seen wide angle lenses जो होते हैं वो कितने close होता है उसका? But once you start zoom in, क्या होता है? Rear element दूर होने. डिस्टेंस बढ़ाता है ना. हाँ. तो अभी एक चीज बता, जब उतने दूर से लाइट आएगी, जितना टैली आप यूज करते जाओगे, व्हाट हैपन, दैट लाइट वॉन्ट बी दैट मच ऑफ शार्पर. ट्रेवल तो कर रहा है रियर एलिमेंट के बाद सेंसर तक आने के, लाइट हैज टू ट्रेवल. लाइट ट्रेवल करके आएगा ना. आप देखते हो क्या होता है बैरल में, व्हाट यू फील वंस यू आर जूम इन, रियर एलिमेंट आगे जाता है, रियर एलिमेंट आगे जाता है. इट मींस दैट डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड 28 mm. That will be closer to the sensor. 200 mm rear element आगे. Now that area डिस्टेंस ज्यादा बढ़ा. दैट्स द रीजन ये इतना शार्प नहीं होगा, वो अनशार्प हो जाएगा. सो जितने ज्यादा टैली होते जाएंगे, इफ यू कंपेयर सर्टेन फोकल लेंथ, कोई कह रहा है 80 mm और 100 mm, यू कैन से दैट 100 mm हैव द लेस डेप्थ ऑफ फील्ड देन 80 mm. है ना. ये नहीं कह सकते 80 mm हैव द ग्रेट डेप्थ ऑफ फील्ड. ऑलवेज यू हैव टू कंपेयर. अगर कोई कह रहा है 28 mm हैव द ग्रेट डेप्थ ऑफ फील्ड, अब कोई 16 mm है. So you have to tell 28 mm have the great depth of field if you compare with the higher focal length like 35, 40 or 50 mm. So this is one aspect. First is aperture, another is focal length. Okay, not only through the aperture you can, create the shallow depth of field or great depth of field, but through the lens also you can create. So that's the reason there's the three things that affect your depth of field. One is aperture, another is focal length. Third is distance. So guys, just let's take just one second. Let's take a short break and we'll resume it by 8:10. Is it okay? Yes, sir. Okay. So wait. Okay. Now here you can see. Is it visible now? Yeah. Yeah. Okay. Now just see. 35 mm. There is a more depth of field. Aperture remains same. That is f8. Distance is remains same, but just change the focal length 70 mm, 200 mm. Just see the differences. How less depth of field is there. Okay. So is it clear that wide angle have the great depth of field and the telephoto have the shallow depth of field? And you guys know what is wide angle lens, how we calculate wide angle lens, how we calculate the normal lens, and what is normal lens, basically. Well, are using a word called normal lens, right? So after the normal lens focal length, whatever it is, that's become the telephoto. Before the normal lens, that is called the wide angle lenses, right? So anyone have any idea what is normal lens is? जिन लेंसेज में डिस्टॉर्शन नहीं होता है Okay. वो नॉर्मल लेंसेज होंगे, जिनमें डिस्टॉर्शन होगा वो वाइड. ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू सेंटर ऑफ द कैमरा जो लेंस है, जैसे सपोज अभी करंटली जो हमारे फुल फ्रेम सेंसर है उनके लिए लाइक सपोर्ट सॉर्ट ऑफ 50 mm इज अ नॉर्मल लेंस. सो दैट डिपेंड अपॉन द सेंसर साइज की 44-45 mm लाइक जो हमारा अभी फुल फ्रेम सेंसर है फॉर 3 लाइक क्रॉप 4K वाला फॉर दैट, पर उसके लिए लाइक 44-45 mm इज अ नॉर्मल लेंस. एंड अगर हम 65 mm या 70 mm लेंस की बात करते हैं, जैसे IMAX की बात करते हैं, तो उनके लिए फिर डिफरेंट काइंड ऑफ 50 mm लेंस लाइक डिपेंड अपॉन द डायमीटर एंड द सेंसर साइज, उसके हिसाब से कुछ प्रोपोर्शन होता है इसका.
The question is that how we feel it's a normal lens. Very simple. Any lens that angle of view is equivalent to human eye. Okay. That is called normal lens. I use the word human eye, not eyes. Don't get it confused. दोनों आँख का बहुत ज्यादा हो जाएगा. It's human eye. कैमरे में एक ही लेंस होता है ना, हमारा भी एक ही लेंस. Like that. It's human eye, not the eyes. Human eye का जितना भी एंगल, जितना human eye से दिखता है, that much of area is captured by any lens that is called normal lens. Then before that, it's a wide angle lens. Wide angle lens have a certain character. If you are shooting with the wide angle lenses, you can easily recognize that this one is wide angle lenses, right? Wide angle lens में एक अपना कैरेक्टर है वाइड एंगल लेंस का कि इट्स जस्ट लाइक स्ट्रेचिंग. कैरेक्टर क्या वाइड एंगल के स्ट्रेच इट आउट. whatever in foreground it will stretch toward the lens, whatever in the background उसको background की तरफ stretch करता है. You guys have used your front camera for a selfie, right? Every phone selfie camera have the wide angle lenses. Have you seen that कितना hand और face का कितना ज्यादा distance दिखाता है? ये stretch करता है, स्ट्रेच Yes, sir. करता है. So wide angle lenses have the capacity और उसका character है कि it will stretch it out, right? Same with the telephoto. Telephoto क्या करता है? Telephoto have the quality to compress it. So have you used the telephoto lenses? At that point of time, you can see कि इस बॉटल से बैकग्राउंड कैसा लगने लगा. Just say to it. Is it compression? Just look like the Yes. background is coming towards the foreground. Bottom. Foreground is going towards the background, right? So there is a compression basically in the telephoto lenses. So any images you can see, अगर जो normal से compressed लग रहा है या normal से stretched लग रहा है, you can easily calculate this one is wide, this frame is normal, and this particular thing is shooted on telephoto lenses. As you can see over here, is the 28 mm. See the distance, see the background, see the distance between background and foreground. दिख रहा है ना? सो जैसे ही आप वाइड एंगल से क्लिक करोगे, वाइड एंगल का अपना कैरेक्टर इन एनी इमेजेस जिसमें वाइड एंगल यूज होगा, इजिली यू कैन रिकॉग्नाइज इट, राइट? नॉर्मल में जो ह्यूमन आई को दिख रहा है, द सेम थिंग्स विल बी रेप्लिकेटेड बाय नॉर्मल लेंसेज, राइट? बट दैट्स द डेफिनेशन कि कोई लेंस ऐसा करेगा. बट एज ही सेड अर्लियर, इट्स डिपेंड अपॉन द सेंसर साइज, राइट? The sensor will decide what will be the focal length, what will be the normal lens for that particular sensor size. It's very easy. A square plus B square जिसको भी आता है, you guys can calculate. एक simple formula है. Whatever the diagonal measurement of your sensor, whatever the diagonal measurement of your sensor, that will be the focal length for your normal lens. It's very simple. Whatever the diagonal measurement जो भी है, सपोज करो he said earlier 36/24, इसका diagonal निकालोगे, पैथागोरस है ना, हाँ, diagonal निकालो, it's become 42 point something. But exactly will not figure it out कि exactly उस पे stuck हो जाएंगे कि we should use 42 mm. 10-15 mm से it won't affect too much. So that's why we consider for the full frame 35 mm to 50 mm is normal lens. Before 35, that's become the wide. After 50, 60, that's become the telephoto. That's the calculation. But the same things won't apply on the another sensor which have the smaller sensor size. Suppose any APS-C, any camera that by the 24/16, right? Suppose 36/24 is the one sensor size, another sensor is 24/16. Obviously इसका diagonal कम होगा ना, diagonal measurement कम होगा, focal length, normal length कम होगा. If anyone knows the mathematical calculation, you can calculate it, that the what should be the uh, like diagonal measurement for 24/16. You can calculate exactly. So that particular is normal length, focal length. So it didn't mean that 35 to 50 is a normal, so it will be normal for everywhere. No. Every sensor have the crop factor, right? A smaller sensor have the crop factor, right? So, one second.
So I just explained what is crop factor is. You know the full frame sensor size is 36 by 24. That is full frame sensor size, right? Other sensor maybe that is 24 by 16 and whatever it is, right? So the ratio between one ratio that you have 36 by 24, right? And another is 24 by 16. Whatever the ratio will be, that is called the crop factor, right? कि दोनों के size में जो differences है, that difference is called crop factor. So maybe sometimes in some sensor have the 1.5 crop factor, some camera have the 1.6, right? Some have 2. So why you need this factor? Why you need this factor? You guys gonna purchase the camera. सेंसर का साइज नहीं लिखा हुआ रहता है स्पेसिफिकेशन में बहुत जगह, बट इजिली आपको मिल जाएगा 1.5 क्रॉप फैक्टर लिखा हुआ रहता है ना. But easily you can recognize it कि 1.5 1.6 crop factor is why they are giving that certain number. क्या जब पता तो है आपको सेंसर छोटा है, then why you need it? The reason is कि many cameras or Sony जो भी APS-C or smaller sensor that they are making, they are saying that we have made dedicated lenses. Like for that particular camera which have the smaller sensor, they made any lenses that is 18 mm. So you think that dedicated lenses means कि this lens that is 18 mm will give you the effect of 18 mm on the sensor which is cropped. No, that won't possible. Because as earlier I told you, the focal length is distance between rear element of the lens to the sensor is focal length. How it will possible? 18 mm तो होगा, lens तो 18 mm ही है. Lens is 18 mm, right? But your camera is cropped, right? So it means your lens is not giving you the feel of 18 mm. Basically, your lens is not giving you feel of 18 mm. So what happened? So what it should be, क्या दे रहा है हमें feel? किस focal length का feel दे रहा है? Just multiply your focal length by your crop factor. आप 18 को 1.5 से multiply करो कितना होता है? Just calculate now. 18 multiplied by 1.5. That's become 27 mm. So basically, any camera or any sensor that have the 1.5 crop factor and you are using 18 mm lenses, so basically it will not give you the 18 mm feel. It will give you the 27 mm feel. It's not 118 mm. It's 27 mm. So basically, जब भी आपको कोई sensor that you are using or any lens that you are using, so you can say if you are using any crop factor sensor and you are using any another lenses, so you can say that कि our effective focal length is 27 mm. Because physically lens change नहीं हो रहा है, physically lens zoom in नहीं हो रहा है, so that's the reason use technical word. Our effective focal length is 27 mm. Our lens is 18 mm, but our effective focal length is 27 mm, right? Is there any confusion है किसी को? No, sir. Anyone? Is it clear that the how to calculate normal lens for any sensor? And every sensor have Yes, the sir. different focal length, right? And how to calculate effective focal length if you have the crop factor lenses, sorry, sensor. So just multiply your focal length by whatever the crop factor is. So you will get the exactly your effective focal length. So here I can कि अभी मैंने कहा था आपको there is a 3 things that affect depth of field. Now there is a 4 things that indirectly affect depth of field. We'll discuss on it. So if anyone have any doubt, don't want to ask directly, you can drop the message in message box. Now see, distance to the subject.
The closer you are to your subject, the smaller the depth of field will be. The further you are from your subject, the greater the depth of field will be. From 3 meters away with the 25 mm lens, everything is in focus. They won't change the aperture. They won't change the lens. You just change the distance. Now everything is in focus. Just see. With the same lens, 28 mm, but only from 20 centimeter away from the depth of field is shallow. अभी यहाँ aperture काम कर रहा है. This kind of effect is created by what? By lens, by aperture, or by distance? Distance. By distance, right? How possible? ये कैसे हो सकता है? बड़ा सिंपल है. आप एक काम करो, अपने फेस के आगे ना अपना हाथ रखो, हाथ पे फोकस करो और बैकग्राउंड की चीजें देखो, ब्लर दिखाई देंगी. जस्ट ट्राई. हाथ आगे करके देखो, चीजें ब्लर हो रही है. Yes, sir. बैकग्राउंड की चीजें ब्लर हो रही है. डू यू फील दैट एवरीथिंग इज ब्लरी Yes, sir. once you focused on your hand, right? अब एक काम करो, कहीं डिस्टेंस पे देखो. नाउ एवरीथिंग इज इन फोकस. सो इफ द क्लोजिंग फोकसिंग डिस्टेंस जो तुम्हारा होता है, अगर जितना नजदीक लेके जाओगे, राइट, क्या होगा? यू गेट शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड. डिस्टेंस, फोकसिंग डिस्टेंस जितना ज्यादा, यू विल गेट मोर डेप्थ ऑफ फील्ड. अभी ये क्लियर है? तो फिर से देख लीजिए. नाउ डिस्टेंस. अच्छा, डिस्टेंस में आप लोग कंफ्यूज क्या कर रहे हो? कहीं यू गाइस आर कंफ्यूजिंग कि कैमरा डिस्टेंस. आई एम टॉकिंग अबाउट द फोकसिंग डिस्टेंस. सपोज फॉर एन एग्जांपल, इफ योर कैमरा इज ओवर हियर, अगर तुम फोकस कर रहे हो 28 फीट पे या फोकस कर रहे हो 20 सेंटीमीटर पे, तो फोकसिंग जो डिस्टेंस है, दैट इज ग्रेटर, देन देयर विल बी ग्रेट डेप्थ ऑफ फील्ड. अगर फोकसिंग डिस्टेंस कम है, इट मींस देन देयर विल बी द शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड. है ना? So now these three things are clear, everyone? Yes, sir. ना अभी यहाँ क्लियर हो जाएगा आपको. हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द फोकसिंग डिस्टेंस. कैमरा एक ही पॉइंट पे है, कैमरा चेंज नहीं हुआ है. जस्ट शिफ्टेड द फोकसिंग पॉइंट फ्रॉम 1 to 5 to 25. 1 to 5 to 25. कैमरा वही है, सिर्फ फोकसिंग डिस्टेंस चेंज हुआ है. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जस्ट लुक एट योर हैंड, सी द फिंगर्स, द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी आउट ऑफ फोकस. पीछे देख लो, आप तो वही हो, आप आगे पीछे नहीं गए हो एज एन पर्सन, but now everything is in focus. So just like that, camera एक ही जगह पर है. If you change the focusing distance at that point of time, वहां पर there will be the shallow depth of field and there will be the great depth of field. So basically, you can achieve this effect that's called the depth of field by three things. By three things: by distance, by aperture, or by lens. Is it clear now? So here it Yes, sir. is. Yeah, here it is. The three things that affect your depth of field. Now there's the four things that indirectly affect your depth of field. What it is? Is that sensor? Is that sensor that affects? चलो एक question पूछता है. Which sensor have the great depth of field? A smaller sensor or full frame sensor? The full frame. Full frame, sir. Full frame sensor have great depth of field. Yes, sir. चलिए चलिए ये भी कॉन्सेप्ट दूर कर देते हैं थोड़ा सा. जस्ट मेक इट क्लियर करते हैं. चलो
So a smaller sensor, right? अभी मैंने क्या बताया था? Bigger the sensor, sorry, bigger sensor जो हमारा है, that is 36 by 24, have the normal lens focal length is 42 mm, right? For an example, it's a 42 mm, right? The sensor which is smaller than this, right? उसका क्या होगा? कम होगा ना? Yes, sir. उसका कम होगा. For an example, कम होगा ना? Sir. Just for an example, just take an example. That is maybe normal lens is 30 mm. For crop sensor, normal is 30 mm. For full frame, it is 42 mm. Is it clear now? Yes, sir. कम तो होगा ही Yes, ना. sir. If the width and height is smaller, the diagonal measurement will be smaller, right? If you compare with the 36 by 24, क्योंकि mathematical calculation नहीं निकालते, it will take time. So just एक lump sum figure लेते हैं. If the smaller width and height, right? लिख लो, पेन पे लिखना हो तो. उसका measurement भी तो कम होगा ना, diagonal. That diagonal measurement will be less. So for an example, if the full frame have the 42 mm, suppose for an example, right? Now, another have the 30, right? 30 mm, 42 mm. चलता है. So now, we have to shoot some scene, right? And director told us I want the use 42 mm. For an example, exactly 42 mm feel that I want, right? You just fix the full frame camera, you will get that 42 mm, right? 42 mm का कोई lens लगाए, you will get that. मिल जाएगा ना? Is that clear? If you are using full frame camera. Suppose for an example there, right? I told you now the camera is, that sensor is cropped. I want the field of view of 42 mm. Now, what you have to do? You need to do. क्या करोगे to get that 42 mm? 42 को डिवाइड करोगे सर वो क्रॉपिंग फैक्टर से. Cropping factor से करें. Suppose no, for an example, just if you use 42 mm, क्या हो जाएगा? Suppose करो इसका crop factor था 1.5. What it become? If you use 42 mm lenses, what happened? 28 mm. 40 multiply कीजिए 1.5 से. 60 mm prox. 60 mm. You will get effective focal length of 60 mm, right? So you Yes, will sir. not able to get exactly that director want. Yes, sir. You are using 42 mm lenses. That's okay. You are using 42 mm lenses, but you are not getting that angle of view that is given by the full frame sensor, the exactly 42, right? Yes, sir. वो नहीं मिल रहा है आपको. आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है 60 mm का फील मिल रहा है. Yes, अब sir. एक चीज बताओ. नो 60 mm का मिल रहा है आपको. क्या करना पड़ेगा टू गेट द 42 mm? लेंस थोड़ा और वाइड यूज करना पड़ेगा. You have to use more wider lens nearby the 28 mm. Just multiply 28 by 1.5. Multiply. 42 mm. 42 आ गया. Yes, sir. Now, to get the field of view of 42 mm, field of view is angle, right? Angle of view. Angle of view is, to get angle of view is 42 mm, right? You have to use 28 mm lens, right? Now, you fix that 28 mm lenses on that particular camera. And there is a full frame camera also, both cameras. Now, on 22 mm, you are able to get that angle of view that director wanted, right? Yes, sir. Clear? Now just compare it. What happened? Full frame have the 42 mm and your camera have the 28 mm, right? Yes, sir. Now here is the answer. Wider the lens, wide angle lenses, a 42 mm or 28 mm. Which one is wider? 28 mm. So 28 mm in this case. Which lens have the great depth of field now? 42 mm. Great depth of field. So 28 mm. no? 28 mm. Wider lens have ना, अभी हमने बताया ना, wide angle lenses have the great depth of field. Compare. तभी मैंने कहा था आपको कि compare में करना है, ऐसे नहीं बताना है.
है ना। इफ यू कंपेयर 42 mm एंड 28 mm, अभी हमने क्या बताया, जितना टैली होते जाएगा डेप्थ ऑफ फील्ड उतना कम होते जाएगा। कम यार होता मैंने है। एग्जांपल में भी दिखाया आपको 28 mm, 72, 100 mm, राइट। तो इन 28 और अनदर इज 42, डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा किसमें? अगर क्रॉप सेंसर है तो दोनों में सेम रहेगा, डेप्थ दोनों में? सेम रहेगा। नहीं नहीं, मैंने आपने क्वेश्चन फिर मेरा नहीं समझा। मैंने पूछा था कि फुल फ्रेम सेंसर एंड द क्रॉप सेंसर, विच सेंसर हैव ग्रेट डेप्थ ऑफ फील्ड और मोर डेप्थ ऑफ फील्ड इफ यू कंपेयर। सो हियर आई एम कंपेयरिंग द लेंसेज। सो समवन टोल्ड मी दैट, अभी किसी ने ग्रुप में कहा था क्रॉप हैव द, क्या बताया था आपने, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, राइट। चलिए फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं। हमने अभी क्या कहा, आई जस्ट गिवन टू एग्जांपल ऑफ वन लेंसेज की सपोज करो आई वांट दैट 50 mm ले लेते हैं, दैट इज ओके फॉर यू गाइस, कि एवरी लेंस हैव द सर्टेन व्यू, राइट, एंगल ऑफ व्यू। जो 50 का होगा 28 का उससे वाइडर होगा, राइट, 70 का उससे कम होगा, यही होता है, यस सर। राइट। ठीक है, सपोज करो फॉर एन एग्जांपल डायरेक्टर ने कहा कि आई वांट दैट द 50 mm फिल्म लेंस इज ओवर हियर, राइट। 50 mm का लेंस आपने लगा दिया, यू गेट दैट मच ऑफ फील्ड ऑफ व्यू, बट दैट इज ऑन फुल फ्रेम सेंसर था। सपोज नेक्स्ट डे कैमरा चेंज हो गया and you get the camera which have the crop sensor, right, and factor is 1.5, crop factor was 1.5. So are you able to get the same field of view that you are getting on full frame? नो, What happened? उसका फोकल लेंथ और बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 50, 75। 70, 75। 75, right, 75 हो गया ना। यस सर। तो 50 के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? I मेरे को want that 50 mm ना, I don't want to shoot on 75 mm, I want 50 mm। 33 अप्रोक्स लेंस यूज करना पड़ेगा। 35 का crop lens लगना, you have to use 35 mm lenses. Now on full frame sensor that is 50 mm, on crop, you only need 35 mm to get the effect of 50 mm. You are getting my point? To यस सर। get the effect of 50 mm, you have to use 35 mm. To get the effect of 50, now you have to use 35 mm. Here is the answer is कि हमें सिंपल पता है कि भाई wider the lens, depth of field ज्यादा होगा. It's very simple. लेंस जितना वाइड डेप्थ ऑफ फील्ड उतना ज्यादा. तो 32, 35 और 50, which one have the more depth of field? 35 mm, राइट. 35। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का. एक तो लेंस से हो गया, दूसरा सपोज फॉर एन एग्जांपल you fix 50 mm over there, right, and you don't have option to change the lens. तुम्हारे पास लेंस ही नहीं 35 mm. Now what you will do? Move the camera towards or Move the backward. camera towards the away. You have to take your camera back, right? Back. Now your distance is increased. Yes sir. डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो क्या होगा? वो डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ेगा. डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ेगा। Yes, sir. Depth of field greater side जाएगा. नाउ इज इट क्लियर? Yes, यस sir. सर। कि जो आपका स्मॉलर सेंसर है दैट हैव द ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड इन कंपेयर टू फुल फ्रेम सेंसर. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली इट अफेक्ट. कोई मूवमेंट नहीं, कोई अपर्चर की तरह चीजें चेंज नहीं हो रही है, राइट. कुछ नहीं हो रहा है. इनडायरेक्टली सेंसर का जो अगर कंपेयर करोगे देयर इज इफेक्ट ऑफ इट, वहां है. सो इफ समवन आस्क यू, सो देयर इज ओनली थ्री थिंग्स दैट अफेक्ट योर डेप्थ ऑफ फील्ड डायरेक्टली. इन टर्म में हम कह सकते हैं और दोनों तरीके से प्रूव भी कर सकते हैं, इट्स यस और इट्स नो. यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है. वेरी सिंपल नो. बट ये इनडायरेक्टली कर रहा है, डायरेक्टली नहीं कर रहा है. If you compare, if someone asks you to compare those lenses, कि what's the difference, full frame और इसमें क्या है, then you can explain like that कि ये इसके कारण है, right? This is the reason, these are the reasons. To get that field of view,
you need to take your camera back, or either you have to change your lenses, right? तो यहां तक में कोई प्रॉब्लम आई थिंक डेप्थ ऑफ फील्ड में? No, guys, maybe for someone or who are not familiar with this terminology, right? Maybe it will take time, 2 or 3 days or 4 days. You guys can practice over there, because if things are new for you, right? Because it takes time to understand depth of field or aperture. It's just very practical things once you start doing practical. अभी मैं तुम्हें practical करवा सकता हूँ for distance only. Distance का practical after the classes you guys can, अगर फोन भी है उससे भी कर सकते हो. जस्ट गो टू क्लोजर टू समथिंग, ट्राई टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, सी द बैकग्राउंड, एवरीथिंग विल बी ब्लर. हो जाता है ना? दैट्स अ डिस्टेंस. ऐसे ही अपर्चर का कर सकते हो, एंड आई विल सेंड दिस पीपीटी सो इट विल हेल्प यू आउट, राइट? So from shutter, ISO, aperture and depth of field, if anyone have any doubt, you guys can ask. नहीं है तो एक काम करते हैं, जस्ट एक एक्सपोजर कंपनसेशन करते, सो यू गाइस विल अंडरस्टैंड दोस थिंग्स. इससे आइडिया भी लग जाएगा आप लोगों ने समझा या नहीं समझा. जस्ट write it down. Your aperture is 5.6. Your ISO is, your aperture is 5.6. 1 second, let me clear it out. Write it down. Aperture 5.6. ISO 400. Shutter speed 1/50th. Now, second things. अब क्या क्या हमने? Shutter speed is 200. Aperture is 11. Aperture is 11. Now, what should be the ISO to get the same exposure as previous one? In previous one, your aperture is f 5.6, your ISO is 400, your shutter speed is 1/50. Now your shutter speed is 200, your aperture is f11. Now what should be your shutter speed? क्या होगा? फोर हंड्रेड ही होगा सर. क्या? 400. 400 ही होगा. 400 ही होगा. चलिए, राइट आंसर. चलिए, और किसी के पास? एनीवन है? मैं एक्सपोजर एक काम करता हूँ. आई जस्ट एक्सप्लेन इट. यू गाइस हैव राइट डाउन दैट द f5.6, ISO 400. सबने लिख लिया है? शटर स्पीड 1/50, राइट? यस लिखा सर. हुआ है. सेकंड लिखिए आप, शटर स्पीड 200 लिखा हुआ है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? क्या हुआ? 1/50 से शटर स्पीड 200 हुआ. कितने स्टॉप का डिफरेंस हुआ? हाउ मच स्टॉप डिफरेंस इट इज? 2 stop. 50 से 100, 100 से 200, 2 स्टॉप. 2 स्टॉप व्हाट? 2 स्टॉप माइनस प्लस सर. 2 शटर स्पीड बढ़ने से क्या होता है? व्हेन यू इंक्रीज द शटर Light स्पीड कम यू आर होगा. गेटिंग लेस अमाउंट ऑफ लाइट, राइट? सो 2 स्टॉप अंडर. ठीक है. सेकंड पॉइंट, f5.6. f5.6 से किस पे है? 11 पे. कितना स्टॉप हुआ? 2 stop. 2 stop. Again minus 2 stop. How much stop? You are dark. दोनों जोड़ के कितने स्टॉप हो गए? 4 stop. 4 stop. Now you have to compensate it with ISO. What you need to do?
You have to increase your ISO increase full stop. ISO. क्या करना पड़ेगा? 400 से 800, 1 stop, 8 से 16, 2 stop, 16 से 30, 200, 3 stop, 6400 is the right answer. Right? Yes, sir. तो कभी भी many times this kind of calculation will comes in your exam. Just write down both numbers. हर एक नंबर का दूसरे नंबर से how much difference, how much in terms of a stop, how much difference it is. Just write down that differences. Just compensate with another numbers. Right? These are the way only. दिमाग में मत लगाओ, write it down. लिख के करोगे इजिली हो जाएगा, दिमाग में लगाओगे मे बी इफ यू स्किप वन स्टॉप योर आंसर विल बी रॉन्ग. तो यू गाइस कैन प्रैक्टिस ऑफ इट, ये प्रैक्टिस कर सकते हो नंबर्स लिख के कंपनसेट, हाउ टू कंपनसेट एक्सपोजर बेसिकली. तो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल. नाउ इज इट क्लियर? अभी Yes, आप sir. में से किसी ने 400 कहा था. नाउ इज इट क्लियर? हेलो, या Yes, sir. Yes. Yes, sir. क्लियर सागर? Yes, sir. Clear हुआ. बड़ा सिंपल है. ये एक्सपोजर क्या है? ये स्टॉप की बात है कि आपको बस स्टॉप समझना है. अपर सॉरी आईएसओ और शटर तो इतना इजी है कि वो अपने स्टॉप में ही काम करता है. अपर्चर में बस दो नंबर, आई जस्ट टोल्ड यू, जस्ट रिमेंबर दिस टू नंबर्स, राइट? इट विल हेल्प यू आउट. आईएसओ में तो सिंपल है 100, 200, 400, 800, 1600. शटर 1/25, 25, 1/50, 1/100, 200. अगर 30 से चले 30, 60, 120, 240, 480 लाइक दैट. डबलिंग नंबर आते रहेगा. आईएसओ और शटर स्पीड में इट विल बी वन स्टॉप, आइदर डबल और आइदर हाफ. या तो डबल होगा या हाफ होगा. इट्स वेरी सिंपल, है ना? उसको आप ऐसे कंपनसेट कर सकते हैं. So I think you already there is a group, right? WhatsApp group. Yes, sir. You guys, okay. So I'll share you a few questions for the exposure compensation in that group. Okay. Day after tomorrow, you guys can solve those questions. Even in FTI, a few years back, there was a question on exposure compensation. There was two questions basically, the same kind of thing. I'll send you a few 4 or 5 questions. Try to solve it. Send me the answer. Right. So 1 or 2 time or 3 time, if you guys familiar with these things, even in your phone camera, don't mean that you need a DSLR camera. Right now, in every phone there is a shutter, there is aperture, right? हर एक phone में आ चुका है. So see the effect of it. So when you once you are doing practical, right, you get more familiar with it. So थोड़ा बहुत करके देखो. जिसके पास है that's good for you. जिसको पता है it's good for you. जिसको नहीं है you guys can practice it. बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है. Here's the example. You can see it. इससे भी समझ सकते हो. These are for the exposure compensation. You can make your own. कुछ भी number लिखो, any numbers, right? And how to compensate it with the ISO. Look, for the every compensation, like the shutter, ISO, aperture, make a 3 question of it. अपर्चर दो चीजें कांस्टेंट रखते हैं, दो चीजें चेंज करते हैं. व्हाट शुड बी द अपर्चर? नाउ aperture and shutter speed will be the constant. Now what will be the ISO? Just like I asked you earlier, right? Aperture and ISO will be the same. What should be the shutter speed? So make a 3 or 4 or 5 questions. Easily हो जाएगा and you guys will remember these things. इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. So I think for today's whatever I explained it to you, I just repeat it. There's the exposure triangle, shutter, ISO, aperture, depth of field, how to calculate normal lens, and stop. So now we have 10 minutes. So if anyone have any doubt or questions, you guys can ask me.
Anything it's not related to these topics only? No. और topics है तो पूछ लो. Anyone have? नहीं है, चलेगा. But Sir, I want to ask a question. yeah, just ask. Sir, I was shooting a short film a way back. तो मेरे पास 14 mm लेंस था फुल फ्रेम पे. बट व्हेन आई शिफ्टेड टू 4K, उसमें थोड़ा सा क्रॉप आया था. आई थिंक 1/4 1.4 समथिंग क्रॉप था. तो जो 14 mm का फोकल लेंथ था वो लाइक चेंज होकर के 21 या 22 के अप्रॉक्स गया. हाँ बट बिल्कुल. जो रिजल्ट था उसका, लाइक अगर हाँ मैं उसको कंपेयर करता हूँ लाइक 24 बॉक्स से, और जो वो मेरा 14 mm का था, तो उससे वो हाँ. डिफरेंट क्यों लगता है? मतलब देखने में क्यों डिफरेंट लगता है? लाइक उसका वो तो सेम ही रहता है सारा का सारा. क्या ये नहीं. सिर्फ मतलब लेंस का मैन्युफैक्चरिंग की वजह से होता है, या उसका मतलब वाइड का फिनोमेना उस पर भी वर्क करता है? Yeah, I'll let you know that. See, optics are designed as spherical, right? यस Optics सर. are spherical, right? यस सर. Lens दो तरीके के. There's a two kind of lens, spherical and anamorphical, right? Anamorphic. So right now we are talking about the spherical. Spherical lens की अपनी housing होती है. And according to focal length, जितना एंगल देखेगा उसके हिसाब से वो डिजाइन होता है, right? Because you are using in wide angle lenses. तो यस सर. देखोगे जितना अल्ट्रा वाइड जाते हैं उसका लेंस ऐसे होते जाता है, राइट? यस सर. Wider होता है. So the things is that technically or mathematically calculation it's giving you impact of 24 mm, but basically what happened, एक सेकंड तुम्हारा योर ऑप्टिक्स इज रिमेन सेम ना, तुम्हारा ऑप्टिक्स तो वही है. तो 24 mm का डिजाइन अलग है, उसके एलिमेंट्स उसके हिसाब से होंगे, उसके ऑप्टिक्स उस हिसाब से होगा. दैट्स द रीजन यू फील द डिफरेंसेस, बिकॉज उसके ऑप्टिक्स के डिजाइन उसकी चीजें. बिकॉज 24 mm का डिजाइन और 14 mm का डिजाइन इज टू डिफरेंट. वो अल्ट्रा वाइड की कैटेगरी में चला गया, तो उसके ऑप्टिक्स भी वैसे ही होंगे. तो तुम्हें डिफरेंस जो दिख रहा है दैट्स द रीजन, इसलिए दिख रहा है. बट अगर तुम एंगल ऑफ व्यू की बात करोगे, इफ टॉकिंग अबाउट द एंगल ऑफ व्यू, दैट विल बी सेम. वो तुम 24 लगाओ, वो लगाओ, उस पे वो सेम आएगा तुम्हारा, बट हाँ क्वालिटी में फर्क दिखेगा. And it's also depend upon lens to lens. ओके. Your method ask question. And collecting shutter speed, do we have to always calculate like 50, 100, 200? Is because some camera shutter speed 50, 100. No. 125 or 160. Now in digital, what happened? Mudit, 1 second. Mudit, right? In your camera, whatever, when the DSLR have the facility, DSLR ने क्या किया है कि 2 stop 3 stop तक क्या हुआ, one within a 1 stop वो half quarter ऐसे जा रहा है, right? तो 50 to 75 is half an stop, right? Okay, okay. 50 to 75 is half an stop. Somehow you are using a filters or a diffuser material. That diffuser material or the filter have the certain quality. How much intensity of light is cutting right now? So that's called the filter factor. Where is filter factor half an stop, right? So that's the 50 to 75 is half an stop. 50 to But 100 is one stop. 100 but to like yeah. बट लेकिन सर जैसे आपने अभी कंपनसेशन का एक क्वेश्चन दिया, तो हाँ. उसमें हमें शटर स्पीड 50, 100 एंड 200 ऐसे कैलकुलेट करनी थी, So लेकिन whatever the number of shutter and aperture will be there. Suppose करो for an example किसी ने 40 लिख दिया, right? For an या example. या Just mark. Suppose someone written that there's a 40. Now 80 will be the one stop. Now 20 will be the one stop. For your calculation, because ओके. at that point of time, it's not the camera. Camera need light, right? What is the image? Image is the pattern of light. So at that point of time, whatever light is over there, and you are using the 40 shutter speed, not 20 will be the half for the calculation. If you are using 50, now 25 will be the half. So it's totally depend up to you how you want it to use. जो भी ओके. ओके. होगा हाफ और डबल करोगे तो फिर उसी कैलकुलेशन में चलेगा जो कैलकुलेशन आप यूज कर रहे हो. सपोज फॉर एन एग्जांपल यू आर शूटिंग विद NTSC. नाउ देयर इज अ 60 ना. So 25 to 60 is not one stop. 30 to 60 is one stop. So if you need to cut down the light by one stop, you have to use 30, sorry, 120, not the 100.
If you need to reduces the intensity of light by one stop once you are shooting in NTSC, that is 60, 30, basically. So that 60 become 120, not the 100. फिर वो 50 के calculation से नहीं जाएगा. Whatever numbers that you are using, just make it half or double. है ना? But aperture में Okay, ऐसा नहीं है ना. Aperture 1 and 1.4, 2, 2.8, simple है. उसका calculation किया हुआ है ना? तो either मान लो suppose for an example मैं कह रहा हूँ तुम्हें. You are using a certain, sorry, ISO is 150, 150. Now 300 will be the doubling amount, not the 200. If you wanted to take calculation on 150, then 300 is your doubling amount and 75 is your half. clear, sir. Clear? Yep. कोई भी एग्जांपल पकड़ लो. सपोज फॉर एन एग्जांपल वंस अगेन कोई भी और एग्जांपल पकड़ लो. सपोज वेरी इजी एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि ISO 100, shutter speed 50, aperture 4, right? Now ISO become ISO 100 था ना, ISO is 400. Shutter is remain same, aperture is remain same. Now compensate those exposure, make those exposure same. क्या करना पड़ेगा? Previous जो exposure था, the same exposure that I want. क्या करना पड़ेगा? एक एक स्टॉप या तो शटर और उसको अपर्चर को बढ़ाएं या फिर दो स्टॉप दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को किसी बढ़ा भी सकते को हैं. कम कर दे. That's the things. Very simple. ये 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे, easily you guys will understand these things. है ना? और ये बहुत बेसिक्स है. If you think that कि नहीं वो easily आ जाएगा, just practice it. Just practice it. फिर आगे कभी इस पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा, ये सब कॉन्सेप्ट में जाके बैठ जाएगा. So you'll understand for the whole life, right? Or every year there is a questions on exposure compensation. People get confused, है ना? So confused बिल्कुल नहीं करना है. The pattern is write down the numbers. Numbers लिखो, फिंगर पे कैलकुलेट मत करो, भूल जाओगे. Write down the numbers. Also, you should remember this is a stop of aperture. ऐसा नहीं करना 2 and 4 is one stop. 2 का डबल हो गया 4. No, there's a numbers 2, 2.8. So that's the reason I told you earlier कि always remember 1 and 1.4. Make it double. सारे नंबर्स निकाल सकते हो. यही चलता है. सारे नंबर्स निकाल सकते हो. ओके. कल के लिए एक आप लोगों के लिए टास्क है. कल शाम में क्लास है आप लोगों की फॉर टुमारो, राइट? यू गाइस नो व्हाट इज रूल ऑफ थर्ड इज, राइट? Don't get a rule of third. Any two photograph, send it to me what you captured tomorrow. Not on any topics. There's no topics at all. Whatever photograph that you like, just capture it and send it to me. Don't send the previous one that you feel कि बहुत से लोगों ने बताया बहुत अच्छा है. Just capture 2 images and send me by 4:30. After that, I will not download your images because I have to download it, make it folder of it. So don't send me after 4:30. So before 4:30, just send it to me. No. Then I'll discuss on those images, and then there will be the practical and the exercises that you guys will do, and I will discuss on it. Right. So it's just for, so that's why I'm not giving you any topics. After that, I will give you the topics in terms of composition. Right. So for tomorrow, only two photograph. One more thing, if you are capturing it through the phone, make sure phone should be horizontal, not vertical. रील्स आ गए हैं बहुत, बट बनाने नहीं है ना? तो आपको फोन हॉरिजेंटल करना है. फोन से ही कैप्चर करो, कोई दिक्कत नहीं है. कोई कलर करेक्शन कुछ नहीं करना है. एज इट इज जो आपने क्लिक किया, जस्ट सेंड इट टू मी. इज दैट क्लियर? Yes, sir, where do you have to send it? Your mail? I'll send you the mail. You guys are in group now. Someone just, ये थोड़ा सा ग्रुप पुराना हो गया. Can anyone ping a text on that group? Just anyone, just ping a text now. I'll send you I will share my mail ID over there.
We cannot text on the group chat. Okay, look, one second, 1 second. In chat box, I'm just writing it. Okay. Send it to me. Okay, I'll share it here. वो group है, I'll share it in group. यहाँ नहीं हो रहा है. One more thing, I'll share this PPT by tomorrow morning from the office mail ID. They will send it to you guys. The same PPT that we have discussed over here. So it will help you out. If कुछ भी miss होगा तो you guys can do it out. So now I think anyone have any question to ask? No, so then should leave. Thank you everyone.